Assalamu alaikum junior 1, how are you all? Beta, it's your Nexus English grammar time, so please open your books, unit number 4, two sounds of G, on page number 12 and 13. In my previous lecture I explained about two sounds of G, that sound of G has two sounds. Number one sound of G, its own sound, and the other sound of G is like that of J. एक साउंड जो है वो G की अपनी साउंड होती है और जो दूसरी साउंड है वो होती है J. ठीक है. आई होप यू हैव completed your homework on page number 13 part A. Now move on next work. Speak each word, write the sound of its G under it. बेटा हर एक वर्ड को आपने बोलना है और उसके नीचे आपने बताना है कि वो कौन सी साउंड है, साउंड ऑफ G है या साउंड ऑफ J है. लाइक नंबर 1 इज़ गिव. गिव, इट्स अ साउंड ऑफ G. ग्रो, ग्रो also G sound. गर्ल, G sound. gill, it's also G sound. glow, G sound. ginger, ginger is J sound. garden, G sound. gay, G sound. george, george, J sound. gulp, G sound. Part C, look at each picture, write the word for it, also write the sound of G. बेटा हर एक पिक्चर को आपने देखना है और उसका जो वर्ड है यानी जो उसका नेमिंग वर्ड है वो आपने लिखना है और उसके साथ ही उसकी साउंड ऑफ G भी राइट करनी है. जैसे कि जो फर्स्ट पिक्चर है दैट इज़ गेट. गेट, गेट है और साउंड ऑफ G. नेक्स्ट वन ग्लास. ग्लास, साउंड ऑफ G. गार्डन, garden, sound of G. And the last word is ginger. Ginger, it's also sound of J. Ginger, J. Better you have to complete these parts B and C on your book and also revise this chapter, two sounds of G. Thank you so much. Allah Hafiz.